Namaskar, Suswagatam. Welcome to the first semi-final of the Silver Plate Anandrathi GSC T20 League Season 5. Match number 41, the first semi-final between the teams placed at the number 6 and the number 7 positions on the points table. To my right, it's Daksh Agarwal and Team Riders. To my left, it's Varun Sabu and Team Blasters. Tosca Boss, it's one of our pillars of strength, that is Pramod Kashyap, the Tosca Boss. Who's going to be taking the call? Varun to take the call. Toss time. Heads is the call. It comes down heads. Varun, some sort of consolation that you all have made it to the semi-final of the Silver Plate. Mission 1 was to get to the Gold Plate Championship playoffs. Never mind, it's a fresh start. Just go out there, enjoy the game. It's a semi-final stage. Never mind what plate it is. No, absolutely. Cricket is all about enjoying it, and our team has been enjoying overall. We have really enjoyed the company of every player, the way they have shaped up, the way they played. We could not have the right start in the beginning, but we still came back well, and we are happy with how things have been. And it's great to play someone like Daksh in front of you, so it's good fun. We like to bowl first. Wishing all the very best to Team Blasters for the first semi-final match of the Silver Plate. Daksh, a bit of a challenge to motivate your guys in this kind of a situation, but as a professional cricketer, as a professional outfit, every time you take to the ground, take to those 22 yards, you got to set an example. So yes, the motivation has to be there somehow. You got to galvanize your team to play their good cricket. Yeah, you rightly mentioned that as soon as you step out onto this ground, you've got to play good cricket. And as soon as there's any game, be it a Silver Cup or any cup, you have to give it your all, because, you know, you've committed to the owners and to the league that you'll be playing. And the team has gelled up really well. We didn't click throughout the tournament, but we're happy to play the semi-finals, qualified after we won against Chargers. So yes, we'll try to play our best cricket that we've tried to play throughout the league. Very rarely we will find a team like Riders in the bottom half, but that's the way this game of cricket goes. A bad season does not mean both for Varun and Daksh that your story is over. A big season ahead of you guys. Yes, it's time for both the teams to assemble together and realign for that team snap. Pramod Kashyap, our Tosca Boss. It's going to be a 7 p.m. start on the dot. Make no two bones about it. इस मैच के टॉस को जीता है वरुण साबू ने और गेंदबाजी का चयन किया है बल्लेबाजी के लिए बिल्कुल सज्ज होती हुई टीम राइडर्स. टीम ब्लास्टर्स के ओनर्स वरुण साबू, श्रीगोपाल जाजू, जय अग्रवाल. दूसरी तरफ टीम राइडर्स के ओनर्स लक्ष्मीकांत टिब्रेवाला जी, सुरेंद्र गाडिया जी और धनराज अशोक जिलान जी. चले they are the first semi-final. Time to produce those smiles. One with a thumbs up. बोलो गणपति बाप्पा. राष्ट्रगान के लिए बिल्कुल स्तब्ध खड़े होंगे. कैप्स और हैट्स को परे रखते हैं. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा. तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे. गाहे तव जय गाथा. जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय जय
जय हे Mata ki. One day. Yes, it's going to be a 7 p.m. start on the dot. Varun Sabu, that is team Blasters, having won the toss. They decided to be bowling first. Good evening, ladies and gentlemen, boys and girls, and a warm welcome to the Silver Plate Semi-Final 1 of the ANANDRATHI GSC T20 League Season 5. The Silver Plate Championship being contested between the teams holding positions number 5, 6, 7 and 8. The teams at the 9 and the 10 number positions, they pretty much are out of the tournament. That is the defending champions, Team Ace Chargers and Team Gangsters. Team Warriors, Team Blasters, Team Riders and Team Tigers. The 4 teams playing the 2 semi-finals. The Golden Plate Championship, that is Team Challengers, Team Gladiators at the number 3 spot, the team at the number 2 spot, Super Kings, and the team at the number 4 spot, that is Rising Titans. Tomorrow, the qualifier number 1, it's going to be contested between Team Challengers and Team Super Kings. The team that wins tomorrow's qualifier number 1 makes it to the grand finale of the ANANDRATHI GSC T20 League Season 5. The grand finale to be held on 21st of December. After that, it's going to be the semi-final number 2 as far as this event is concerned. And after the semi-final number 2 of the Silver Plate, it's going to be the eliminator and then the qualifier number 2. And then the final of the Silver Plate and then the grand finale on the 21st of December. This is game number 41. After this, or rather including this, we've got 8 more matches. 21st of December is going to be the grand finale. Big thank you to our title sponsor, that is ANANDRATHI Preferred, Wild Stories for Life, Cryptomania, the web series, for having sponsored all the boundaries in this tournament. Chetak Ply, Maharaja of Kipasand, having sponsored the Sixers. K. Talsania Construction Wickets for sponsoring the wickets. Then we have Sejal Realty for having sponsored the DRS third umpire's box. And then Bharaj Rubber Processing Machinery for having sponsored the overs, and also the Spectra Group for having jointly co-sponsored the overs. Gifting partners Me and Specs and Hashtag Nuts, the complimentary tea and coffee counter which is in much demand, that is courtesy Ravindra Matharu playing for Team Blasters. And last but not the least, pain relief partner Zandu Fast Relief. Thanking the GSC team, the staff team, for the wonderful back office job that they have accomplished to get this tournament going on in a fantastic momentum, and they are taking it to its logical conclusion. The groundsmen have obviously done a fantastic job. The man behind the show, that is the GSC Cricket Committee Chairman and the Outdoor Sports Chairman, that is Kaushik Bhai Mehta. He is the Governing Council member of the GSC, Mr. Kaushik Mehta. Thanking Kaushik Mehta and his whole team. A big thank you to all the viewers on YouTube for placing that trust, endorsing this event with a wonderful viewership. Thank you so much. All in all, we meet with live action for the semi-final number 1. That is the Silver Plate of the ANANDRATHI GSC T20 League Season 5, 7 p.m. Live action on the dot. We join all you guys. Thank you. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Ready?
Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. कौन है रे? Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. कौन है रे?
Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. कौन है रे? Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. कौन है रे?
सुस्वागतम। इस मैच के टॉस को जीता है टीम ब्लास्टर्स ने, यानी कि वरुण साबू ने गेंदबाजी का चयन किया। इस टूर्नामेंट का ये 41वां मैच और ये मैच सिल्वर प्लेट का पहला सेमीफाइनल है। गेंदबाजी का भार संभाले हुए शौर्य जाजू, एक अच्छा युवा प्रतिभाशाली क्रिकेटर। मेहनत मशक्कत करनी होगी, अच्छा भविष्य नजर आता हुआ। You got to be true to the game. If you respect the game of cricket, the game of cricket will provide you with respect. To give him company, that is Raghav Tibrewala at the non-striking end. Mayuresh Shenoy to take first guard. The first semi-final of the Silver Plate Championship happening between the two teams positioned at the number 6 and the number 7 slots. The round-robin league format done and dusted with. Tomorrow, qualifier number 1, Team Challengers versus Team Super Kings. The team that wins tomorrow's match goes to the grand finale. The team that loses tomorrow's qualifier number 1 will be playing that qualifier number 2 as well. They get one more shot at the trophy. Let's load our guns. Fire. That's a very good line. The ball keeping just a little low. It goes to Tushar Uchil on the second bounce. Ajay Agarwal, Varun Sabu, Shigopal Jaju, the three corners for Team Blasters. In spite of everything, Ajay is looking to make sure that everything is smooth in the camp. Game of cricket at the end of the day. A few matches or one season, if it does not go your way, does not mean that your story is over. It's a long season ahead. You got to learn from your mistakes. So yes, tomorrow it's not going to be the qualifier number 1. It's going to be the second semi-final match. The match between the two teams positioned at the number 5 and the number 8 positions. A couple of very good knocks from Mayuresh Shenoy. A golden opportunity for Raghav Tibrewala to crack the opening code. It's a no pressure game. No point in taking undue pressure in this kind of a match. Do not want to overthink. You do not want to go overboard. Do not forget to enjoy the game. Falling in no man's land. Not too far away from Varun Sabu in that mid-off area.
closing the face of the bat a little too early. The moral victory for Jaju in the very first over, inducing a fall shot. अच्छी गेंद देखिए, अच्छा कैरी है, लाइन भी अच्छी है, थोड़ा सा रूम जरूर दिया था. अगर हल्का सा भी संपर्क होता तो क्रिप्टोमेनिया चौका बिल्कुल मिलता, वरना एज भी जाता. स्लिप पर फील्डर मौजूद है, स्लिप में. एक सम्मानजनक पहला ओवर वहां पर मुकम्मल किया शौर्य जाजू ने. जय कनौडिया, जयकार धामी, आयुष अग्रवाल, शौर्य जाजू, ये चार ऐसे सीमर्स जो रफ्तार से बल्लेबाज को गिरफ्तार करते हैं. What a season it is turning out to be for Ayush Agarwal, picking up a Man of the Match award. Jay Kanodia has been very good. Jay Kardhami has showed a few glimpses of brilliance. Shaurya, early days, but is showing the promise. A good all-round skill set being possessed by Shaurya Jaju. Monish Shah it is to operate with a new ball from the in-orbit end. That is Monish Shah's preferred end. Now drifting into the pads, a loosener game, but dispatching it out of sight with disdain. Cryptomania boundary, the first one of the evening. There you go, the Riders' rhythm quite early in the match. अगर उस रिदम को आप लगातार सुनते रहेंगे तो इसका मतलब यह है कि एक बहुत ही अच्छी स्थिति में है टीम राइडर्स. लाइन को करेक्ट किया, हवा में खेला है, अच्छा कैच. गेंद को नीचे नहीं रख पाए, ठीक तरीके का एलिवेशन भी प्राप्त नहीं कर पाए राघव टिब्रेवाल. हरजाना भुगता है, अपनी विकेट को खोया है. के तलसानिया कंस्ट्रक्शन विकेट, मोनिश के नाम वो विकेट. वरुण साबू ने एक अच्छे कैच को अंजाम दिया. रजिस्टर करते हुए हम उस कैच को कैच ऑफ द मैच के लिए. फेयर डिलीवरी है, ये सुनिश्चित हुआ है. सबसे पहला काम हमारे थर्ड अंपायर का यही है कि जब कभी वो अंपायर की उंगली उठती है, जब कभी वो केत असान्य कंस्ट्रक्शन विकेट का पतन होता है, हर वक्त हर पल सबसे पहले उस गेंद की लीगैलिटी हम चेक करेंगे. और अगर किसी भी तरह से कोई दिक्कत है तो वी विल लेट द ऑन फील्ड अंपायर्स नो. नवीन कोटक सर एंड राजू पवार सर. Cheerleader for Team Riders. The first wicket down. Back in the pavilion is Raghav. Monish gets quite an early bird. Ishan Kapoor. Loads of talent there.
Good shape on that one. Well played. Leaning into that one, caressing the ball into that mid-off area. Just looking to have a feel of the ball on the bat. Sooner than later, we will see Vedant Gadia taking the field. A couple of stints in this tournament and now he's playing game number 3. लेंथ को तब्दील किया. That's Raj in that backward of point area. He hasn't got too many chances, but he's been a live wire in the field. He's been quite enthusiastic whenever he's been called onto the field. His chance will definitely come. Good lines. A good take from Uchil. Welcome to Kuldeep sir and Pramod Kashyap, the toss ka boss. Oh, not far away from the stumps, just a whisker away from the stumps. That would be quite an interesting replay. Let's have a look at the replay. There you go. देखिए गेंद बाहर की तरफ निकली, मिडल और ऑफ पर टप्पा खाकर आउट स्विंग होती हुई बाहर की तरफ निकली वो गेंद. बढ़िया डिलीवरी. वेलकम टू श्रीवत्स कुमार. Quite an early appearance from him. Welcome to Ajit Putran sir. Oh, Jonty Singh. स्वागत है. जॉन्टी सिंह हमारे ऑफिशियल स्कोरर है. गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब के साल भर के स्कोरर वो है. बहुत सारे मेंबर्स के चहीते हैं. स्कोरिंग, अंपायरिंग, कोचिंग सभी कुछ कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा थोड़ा. टीम टाइगर्स को कोच कर रहे थे जॉन्टी. बॉल गुड लाइन. अच्छा कैरी मिलता हुआ. Ten for 1. We are into the third Spectra group.
Balaj machinery over. Short and wide. देखिए वेट ट्रांसफर ही नहीं किया, वो गेंद की तरफ उन्होंने पहल ही नहीं की, जहां थे वहीं पर खड़ा रहे, थोड़ा सा पीछे आए, फिर आखिरी वक्त पर उन्होंने बल्ले को आगे रखा। राघव टिबरेवाला के बल्ले से वो रन्स रूठे हुए हैं और आज भी रूठे रहे। सक्षम बल्लेबाज है, उसके बावजूद वो बड़ी इनिंग्स देखने को नहीं मिली राघव के बल्ले से। Have a feeling that somebody as good as Raghav Tibrewala is constantly failing. Maybe he's fighting his own demons. Maybe he's overthinking about his batting. Maybe थोड़ी सी कश्मकश में है। So far so good from Jaju. जाता ही नहीं हूँ लंबा लंबा, चल जाऊंगा ही नहीं, विदाउट साउंड रहेगा तो कमेंट्री करना। तीन ओवर्स की समाप्ति के बाद 13 रन से 1 विकेट के नुकसान पर मोनिश की पोजीशन गलत थी। मोनिश शुड हैव बीन बिहाइंड द स्टंप्स एंड दैट वुड हैव हेल्प्ड श्रेयांश go for that throw.
The GSC staff team led by Siddhesh Wadekar, सिद्धांत वाडेकर, मोतीबाई की अनुपस्थिति में भी मोतीबाई के साथियों ने, मोतीबाई के बंदों ने अच्छा काम किया है. बढ़िया विकेट्स. वेल बोल्ड. हाँ, यानी ग्राउंड्समैन सभी जायसवाल ब्रदर्स है. जायसवाल के सिवाय किसी को एंट्री नहीं है वहां पर. स्वागत है तरुण कपूर का. तरुण कपूर सर के पास वो लेवल 2 का कोचिंग सर्टिफिकेट अब है, isn't it? Yes. The Nelson mark behind the jersey of Ishan. Up and over she goes. Well struck by Ishan. A confident looking Cryptomania boundary under his belt. The USP for Ishan is he remains pretty much unfazed by what keeps happening around him. Quite a focused guy. A couple of good knocks, but not exactly the big one. 70 plus, 80 plus innings. That is overdue from Ishan. Moiresh Shenoy, that big innings also overdue from him. A very compact player, Moiresh Shenoy, by all means. Terrific hitting, lusty blow. High and handsome. Up and away she goes, sailing into the stands, taking on Monisha. He's not happy at all. Chetak plies 6. Humongous shot. That 6 takes the score to 26 for 1 at the end of 4 overs. It's a no pressure game. You got to go out to express yourself. That's all that you need to do. What you've been doing in the nets, the tricks of the trade that you picked up, just go out there and exhibit them. Look to present your A game and do not forget to enjoy the game. Kuldeep sir, you have to enjoy the game. It's a no-brainer that every time you go out there at this level, you got to enjoy the game. स्वागत है अल्पेश शाह का. Tomorrow evening, the second semi-final of this Silver Plate Championship, the match between the number 5 and the number 8 position teams. Being brought into the attack, Shaurya continues. Quite a few young guns have fired on all cylinders in this tournament. What a lovely knock from Gaurav Devli the other night. It was great to see him cut down on his area of shots. He put a price on his wicket. He did the hard work. He was grit and determination. And just look at the end result. What a fantastic knock from Gaurav Devli.
Oh, terrific hitting. What a shot. A super shot from a super talented player. Chetak Ply 6. The best of the lot so far. Almost as if he was waiting in the wings for that kind of a delivery. Was kind of expecting that kind of a delivery. Got into a good position quite early on. Smacking it away. गति में परिवर्तन किया. He gets his man. A well disguised slow one. He gets his man. The big fish in the net. A delivery filled with so much of character. The follow-up delivery after being smacked out of the ground. Good character being exhibited by the young gun. Ketasane construction wicket. It's a fair delivery. That's been confirmed. बिल्कुल मयूरेश शनॉय की जड़ में वो गेंद. स्टंप्स को बिखर गई वो गेंद. Arriving at the wicket, that's the Supremo, Daksh Agarwal. The highest score in the tournament coming off his blade. Indeed a biggie, 142 not out. That was what he put up in that earlier match, league match. देखिए कुलदीप सर, किंगशुक राय, the orange cap holder at the number 9 position. Orange cap holder is quite ahead in terms of runs. उसके बावजूद वो टीम नंबर 9 पे गई. That means the team did not give him the support that he wanted. नंबर 9 पे जो टीम है उस टीम का एक नुमाइंदा ऑरेंज कैप का हकदार है. काफी फर्क है, बहुत सारा फर्क है नंबर 1 पर जो बल्लेबाज है और नंबर 2 पे जो बल्लेबाज है. All these young guns, when they take this kind of a big stage, you should have a feeling that you're playing the World Cup. आपके लिए सबसे बड़ा मंच है. So it's now or never. You got to play as if every game is your last match. You got to play like that. बहुत सारे लोग इस टूर्नामेंट में से आगे बढ़कर जीएससी के क्रिकेट से आगे बढ़कर क्वालिफाई होंगे हाई ग्रेड ऑफ क्रिकेट के लिए. कुछ लोग के लिए यही सबसे हाईएस्ट ग्रेड होगा. और यहाँ का जीएससी का स्टैंडर्ड बढ़िया स्टैंडर्ड है, अच्छा क्रिकेटिंग स्टैंडर्ड है. यहाँ पर भी खेल लिया तो दैट्स अ फेदर इन योर कैप कि आपने जीएससी क्रिकेट खेला है रेगुलरली. वेलकम टू Mr. Sunil Devli. Good effort, brilliantly done by Suryansh. One of the most energetic players at the GSC. We do not have Junior Rai. Junior Rai and Suryansh, two very good backward of point fielders. Sunil Devli will be more than pleased with what Gaurav Devli did yesterday. नेचुरल गेम को थोड़ा सा परे रखा, टीम के लिए डटे रहे, अपनी विकेट पे दाम लगाया, फलस्वरूप एक बढ़िया इनिंग्स, क्राफ्टी इनिंग्स, दैट विल मेक हिम मोर हंग्री फॉर रन्स यहां से आगे जाते हुए. The Aussie Ayush Agarwal is here. Oh yes.
दक्ष अग्रवाल ने कहा कि जब कभी हम मैदान पर जाते हैं तो अच्छा क्रिकेट खेलना ये हमसे बनता है, क्योंकि ओनर्स ने हम में काफ़ी राशि का निवेश किया है, बड़ा मंच है। बिल्कुल सही कहा दक्ष ने। पांच स्पेक्ट्रा ग्रुप 12 मशीनरी ओवर्स के पश्चात 37 पे 2 रन रेट को लेकर मेरे ख्याल से कोई चिंता नहीं है। कम से कम वो 165 से 170 रन्स बनाने की फिराक में होंगे टीम राइडर्स। पहला सेमीफाइनल मैच है। अजमाइश होती हुई वेदांत की इन ऑर्बिट एंड की तरफ से। स्ट्राइक पर ईशान, दक्ष अग्रवाल स्ट्राइक पे। हल्का सा दिशा से भटके दक्ष के सामने गेंदबाजी करना, यानी कि आपको किसी भी तरह से गलती के लिए कोई माफी नहीं है। गलती की सजा फांसी है। बढ़िया मंजर होगा ये। वेदांत गाड़िया बनाम दक्ष अग्रवाल। कैनॉट गेट बिगर देन दिस। Oh, wasn't too far away from Vedant. Throw with the shot a little early. इस तरह के एक शॉट के शिकार हुए कल अनिकेत कवाड़े। Daksh Agarwal has got such a good repertoire of shots, wide range of shots. रन चुरा लिया। रन संख्या अब 42 रनों पर। प्रोजेक्टेड स्कोर 153 है। 153 मेरे ख्याल से ये न्यूनतम स्कोर होना चाहिए, कम से कम न्यूनतम स्कोर 155 होना चाहिए कम से कम, आइडियली 170 प्लस। अहो, अनप्लेएबल। करे तो क्या करे, केवल इतना ही करना है कि उस वाक्य को भूल जाना है, डिलीट करना है अपने जहन से। स्टेप आउट होके खेला है। Oh my God, can you believe it? That's a straightforward catch. That should have been taken 20 times out of 10.
dropping an absolute sitter. चेस स्पेक्ट्रा ग्रुप 12 मशीनरी ओवर्स के पश्चात 43 रन्स बने हैं. 2 के तरसान्य कंसेशन विकेट्स का पतन हुआ है. तीसरा होता हुआ रहा, होते होते बचे. आगमन होता हुआ स्मिथ शाह का. Welcome to Captain Cool. Sanjit Srivastav is having a good run. But the high intensity matches, the high pressure games coming up. Very soon they're going to be a part of the qualifier number 1. You want to win that one and seal your fate. Get to the grand finale. Do not look for that second opportunity. Seal it in the first go. गैप में वो गेंद थोड़ा सा एरियल खेला था. स्मिथ शाह का इस टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस सम्मानजनक. could have been better. A decent performance from him so far. Smith has got the capability to do much more with his all-round skill set. He can be a genuine match winner. One ball left in the 7th over. Getting hold of it. A pretty good connection. One bounce crashing into the Cryptomania boundary fence. Good shot to end the over. The score after 7 overs, 51. 50 plus on the board for Team Riders. 50 up on the board, ladies and gentlemen.
The title sponsor Anandrathi Preferred, Wealth Stories for Life. One extra run. In the first match, he picked up 2 wickets. Oh, what a good delivery. That's a Jaffa. In the last match also, he conceded quite a few extra runs, wide runs, drifting down the leg side. Not getting the required turn. Putting his head down. Very businesslike, Daksh Agarwal. Ishan on to 21 of 15. He needs to take this innings deep. Too short. 3 balls left in over number 8. 53 for 2. Game number 41. Semi-final of the Silver Plate Championship. Anandrathi GSC T20 League 2025. Cracker of a shot. That was begging to be hit away. He obliges big time. A smacking Chetak Ply 6. Maharaja of ki pasand. Not exactly his miserly best. That's Vedant. Struggling a bit with this line. He's moving ahead at a very good pace, Ishan. He's making sure that the momentum is kept going. गेंद को केवल सहलाया एक्स्ट्रा कवर के रीजन में ईशान ने। 8 स्पेक्ट्रा ग्रुप बालाज मशीनरी ओवर्स की समाप्ति पर 60 रन्स 2 के तालसानिया कंस्ट्रक्शन विकेट्स का पतन हुआ है। हर मैच के बाद दिशाल गोपानी की तरफ से मैन ऑफ द मैच के खिताब को 1000 रुपए का वाउचर मिस्टर खांडेलवाल यानी कि हैशटैग नट्स की तरफ से कैच ऑफ द मैच के लिए गिफ्ट हैम्पर। Ravindra Matharu has offered us the complimentary tea and coffee counter. That is so refreshing, much in demand. A relief partner, Zandu Fast Relief. थोड़ा सा बल्ला हाथ में घूमा, हाफ वॉली गेंद थी, ठीक तरह से कनेक्ट नहीं कर पाए ईशान। 61 पे 2। रन रेट को लेकर कोई चिंता नहीं है।
दक्ष की टैक्टिक देख लीजिए, अच्छी थी। देखा है नहीं अंपायर की तरफ, चल पड़े स्क्वायर लेग अंपायर की दिशा में। गुड टैक्टिक। रुक किया है सेजल रियल्टी डीआरएस बॉक्स की तरफ। दिनेश कश्यप सर इनटू एक्शन। Fair delivery. Let's do the rest of the whole procedure. They've lost the review. 61 for 2. That's the fetcher shot. The shot that fetches him so many runs. Oh, very dangerous shot to be playing. Very dangerous shot. Ishan indicating that there was a bat in it. What does Vedant think? They have come into the Sejal Realty DRS box. The DRS setup being sponsored by Sejal Realty, one of our co-sponsors. Welcome to one of our subcommittee members, that is Paresh Muchala. They have to strike gold here, otherwise they lose their balance review. लीगल डिलीवरी ये सुनिश्चित हुआ है.
दोनों ही रिव्यूज खो चुकी है टीम ब्लास्टर्स। 3 गेंदों में 2 रिव्यूज खोए हैं, यह भी बहुत ही कम देखने को मिलेगा। वेलकम टू परेश मुचाला। (62 for 2), 8.5 overs. Well flighted, well bowled. Score at the end of 9 Spectra Group Barrage Machinery overs, that is 62 for the loss of 3 Ketal Sanya construction wickets. Welcome to game number 41 of the ANANDRATHI GSC T20 League Season 5, the first semi-final of the Silver Plate Championship. The teams stationed at the number 6 and the number 7 positions playing this cliffhanger semi-final, winning the toss and opting to bowl first. That is Team Blasters and Varun Sabu. ऐसा नहीं लिखने का सीजन 5, 0.05 लिखने का, 0.5 ऐसा थोड़ी सीजन 5 लिखता है कोई। स्वागत है हमारे टूर्नामेंट रेफरी पश्चिम पाठक सर का। अंकित अग्रवाल एक्स फैक्टर बॉलर की अब आजमाइश हुई है। ड्रिंक्स इंटरवल के पहले का आखिरी ओवर को लेकर इन ऑबी 10 की तरफ से अंकित अग्रवाल, स्ट्राइक पर दक्ष, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर ईशान। 64 पे 2। Workaholic single, a wristy shot. They collect the second run quite easily. छियासठ पे 2। Mr. Lalit Bij, good evening. अच्छा शॉट है, गैप में भी है और काफी लंबा भी वो शॉट गया, अपनी मंजिल को तय कर गया वो शॉट। क्रिप्टोमेनिया चौका, अपने सुनिश्चित स्थान पर वो गेंद पहुंची। 4 रन से दे गई टीम राइडर्स को। All along the ground into that whitish mid-on area. A bit of a fumble there from the Bade Jigra wala Jigar. Cryptomania boundary. The second one on the trot. Not happy with it at all. Ankit Agarwal. 74 for 2. Important runs being collected in over number 10. The final ball coming up. The 10th Spectra Group Barrage Machinery over.
After 10 overs, 75 for 2. Thank you. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. कौन है रे?
Still going by the book, Daksh and Nishan. The 11th over has got underway. Welcome to the post rings interval. 78 for 2. Ishan on to a very well made 32 of 25 balls. देखते देखते दक्ष अग्रवाल 21 गेंदों में 26 तक जा पहुंचे बिना कोई हड़कंप मचाए. बढ़िया एफर्ट, बहुत ही बढ़िया एफर्ट. प्रणव score after 11 overs, 80 for 2 it is. Welcome to Vipul Kalyani, Harshal Shah. The auctions for the GSC 45 plus T20 League happening on the 20th of December evening. The night before the grand finale of the ANANDRATHI GSC T20 League Season 5. To continue, Ankit Agarwal. Short and wide, quite rightly being called the wide run, a wide ball. One bounce to Vedant. नियंत्रण में थे उस शॉट में. Are not able to get hold of that shot delivery. Finding the man. Scoreboard ticking in the form of singles. 11.3 overs, 84 for 2. $85. ये क्रिप्टोमेनिया चौका होना चाहिए.
12 ओवर्स के बाद 86 रन से 2 विकेट के नुकसान पर। स्वागत है आप सभी का आनंद राठी जीएससी टी20 लीग सीजन 5 में 41वां मैच सिल्वर प्लेट चैंपियनशिप का ये पहला सेमीफाइनल। राउंड रॉबिन लीग मैचेस कल खत्म हुए। 40 लीग मैचेस आगाज हुआ है सिल्वर प्लेट चैंपियनशिप के पहले सेमीफाइनल का। ये सेमीफाइनल मुकाबला नंबर 6 और नंबर 7 के स्थान पर जो दो टीम्स मौजूद है उन दो टीम्स के बीच ये कड़ा मुकाबला। कल दूसरा सेमीफाइनल होगा टीम वॉरियर्स बनाम टीम टाइगर्स। Now we will soon see Suryansh into the bowling attack. The way he's warming up. The 19 balls that Smith has bowled have gone for 18 runs. He's not been able to pick a wicket. Well shot of the man stationed at the edge of the circle. Is he hurt? Yes, the Zandu fast relief counter has been kept busy. And even Dr. Tushar from GSC has been very busy right to the tournament. Dr. Tushar. Well bowled. Oh, he misses it.
Oh, what a good delivery. Very well bowled. In spite of being cautious, in spite of being watchful, Daksh is making good headway. He's on to 36 of 28 balls in spite of being cautious. Slow turn. All of a sudden, Nishan has gone a little cold. Score after 13 overs, 95 for 2. Thank you to the title sponsor Anandrathi Preferred, Wealth Stories for Life. 7 lakh plus customers, 150 plus own branches. The boundary sponsor Cryptomania, the web series. Sixer sponsor Chetak Ply, Maharaja of Ki Pasand. Wicket sponsor K. Talsania Construction, Rising Boundless. DRS box sponsored by Sejal Realty. Overs sponsored by Spectra Group and Bharaj Rubber Processing Machinery. The tea and coffee counter Ravindra Matharu. Relief partner Zandu Fast Relief. Gifting partners Me and Specs. Hashtag Nuts. Thank you to one and all for the wonderful support, patronage. In comes Suryansh as was expected. Smith's 4 overs went for 22 runs. He goes wicketless. No extras in his spell. A decent spell. Looking to break the shackles. Thikish inside edge. A couple added. 97 it is. अपनी विकेट पे दाम लगाते हुए ऑर्थोडॉक्स से क्रिकेट खेलते हुए दक्ष संयम के बांध को टूटने नहीं दिया है दक्ष ने. गोइंग बाय द बुक. Nothing short. $99 for 2. That is the 100 to Team Riders. 101. 101 रन्स बने हैं. 2 के तारसानिया कंस्ट्रक्शन विकेट्स का पतन हुआ है. 14वां स्पेक्ट्रा ग्रुप भारत मशीनरी ओवर प्रगति पथ पर है. कुछ चेतक प्लाई सिक्सर्स देखने को मिले हैं. काफी क्रिप्टोमेनिया बाउंड्रीज को अंजाम दिया है टीम राइडर्स ने. मोनिशा डीप मिड विकेट में 14 के बाद 102. बहुत ही बढ़िया साझेदारी है ईशान और दक्ष के बीच.
टीम राइडर्स को अपनी मंजिल तक ले जाती हुई ये साझेदारी। दूसरी तरफ काफी अनुशासन से गेंदबाजी की है टीम ब्लास्टर्स ने। इन आखिरी लम्हों में, आखिरी 6 ओवर्स में अब पूरी तरह से बांधे रखना होगा। इस बात की खबरदारी लेनी होगी कि बड़े शॉट्स को न खेल पाए टीम राइडर्स। बड़े रनों की पाइपलाइन को नेस्त नाबूद करना होगा। वेदांत अपने तीसरे ओवर में अभी तक 13 गेंद किए हैं। वेदांत ने 15 रन्स दिए 13 गेंदों में अभी तक। सफलता कोई भी नहीं। बहुत ही बढ़िया आर्म बॉल, दैट वाज द परफेक्ट आर्म बॉल। केवल दिशा दी। Daksh is into the 40s, 43 of 36. काफी दूर गिरी वो गेंद मोनिश से। प्रोजेक्टेड स्कोर 142। वेल बॉल्ड। एक दूसरे की फितरत को भली भांति जानते हैं वेदांत और दक्ष। बहुत ही अच्छी गेंद। He's nicely mixing up the deliveries, Vedant. It's been a quality over from Vedant. One extra run in the form of a bye. The moral victory for Vedant. The score after 15 overs, 1 of 5 for 2. Current run rate exactly 7 and over. कुछ लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं। Low full toss, getting the bottom hand into play. At the moment, he's just happy to take the singles. That single takes the score to 108 for 2. Ishan on to 40 of 34 balls and Daksh on to 46 of 40. Into the 40s, both the batters.
स्वागत है जुगराज मेहता का। ओवर नंबर 16। (109). Projected score seems to be coming down. 139 at the moment. Oh, super shot. The half century for Daksh Agarwal, the Supremo. It does that in style. Chetak Bly 6. 80-meter hit. 115 पे 2। 41 गेंदों में दक्ष 52 रन्स बना चुका है। थोड़ा सा मोमेंटम अपने पक्ष में बटोरना चाहेगी टीम। राइडर्स अब विशेष रूप में आतिशबाजी देखने को मिलेगी दक्ष के बल्ले से। 16 ओवर्स की समाप्ति हो चुकी है। 16 स्पेक्ट्रा ग्रुप, 12 रबर प्रोसेसिंग मशीनरी ओवर्स। रन संख्या है 116 रन्स, 2 के तलसानिया कंस्ट्रक्शन विकेट्स के नुकसान पर। काफी विकेट्स अब सुरक्षित है। किसी भी वक्त ये दोनों ही बल्लेबाज हर किस्म की बंदिश को तोड़ के तूफानी क्रिकेट खेलेंगे। They could change gears anytime, especially Daksh. It's going to be Vedant Gade to be bowling this final over. Vedant so far 17 runs of the 18 balls that is bowled is gone wicketless so far. The first semi-final of the Silver Plate Championship as far as the Anandrathi GSC Cricket League Season 5 is concerned. Tomorrow it's going to be the semi-final number 2. The match between Team Warriors and Team Tigers. Number 5 and number 8. Number 5 के स्थान पर है Team Tigers. Number 8 पर है Team Warriors. Number 9 पर है Gangsters. Number 10 पे है Ace Chargers. Ace Chargers को इस सीजन को बुरे सपने की तरह भूल जाना होगा। शिकंजा कसते हुए वेदांत। Both these players know each other's strong points. Wanting to raise a red flag for Ishan. The last 3 balls. Good start to the over. Definitely he strangulated Daksh Agarwal, no doubt about it. At the moment he is dominating Daksh at the moment. Welcome to Parag Shah. A brilliant last 2 overs from Vedant. Absolutely brilliant. The final ball coming up in his spell. The 4 overs from Vedant have gone for only 19 runs. More than a decent job. The last 12 balls on the spot. The score after 17 overs, 118 for 2.
The projected score, which was looking 150 plus, has come down to 139. The riders' clap rhythm has gone missing. Being brought back into the attack, that's Agarwal. What a shot! Authority shot. One bounce, Cryptomania boundary. 123 for 2. A total of 16 balls left now. 16 balls. Now they want to get to 150 anyhow. They've got a reasonable number of wickets left in the kitty. Two very well set batters at the wicket. There's no reason why they cannot go past that 150 run mark. Oh, terrific blow. Terrific blow. Fetching the ball from outside the off stump. In fact, dragging it from outside the off stump. Depositing it into that wideish mid-wicket stance. A blazing Chetak ply 6. It's been a bad day in office for Ankit Agarwal. They're taking him on. The 15 balls from Ankit have gone for 32 runs. Good shot. He plays that shot particularly well. वो सेट होने के बाद उस शॉट को खेलते हैं. 64 रन्स बना लिए अपनी 49 गेंदों में. कोशिश ये है कि अब 155 160 तक ले जाए. कोशिश करेंगे 160 की, तब जाके वो 152 155 बनेंगे. टारगेट होगा 160 का. Has it gone far? No. A good running catch. A very good running catch. Let us check the legality of that ball. Ankit Agarwal getting a wicket, but it's inflicted enough damage. Enough runs is accumulated to take Team Riders to a respectable tally, to say the least. Legal delivery तो है. के तरसाने कंस्ट्रक्शन विकेट का पतन हुआ है. एक बिजनेस लाइक इनिंग्स वहां पर खत्म हुई. 97 रन्स की साझेदारी यहीं पर समाप्त होती है. 97 रनों की लड़ाकू साझेदारी. Ujjwal Goel, the Royal Goel, comes into bat. He would have a feeling that there are two less number of deliveries left.
इज गॉट टू प्ले शॉट्स. एकाध गेंद को थोड़ा सा रिस्पेक्ट देंगे, उसके बाद तो प्रहार करेंगे करीबन हर गेंद को. मंजे हुए खिलाड़ी है उज्जवल गोयल. .130. The final ball coming up in over number 18. The final ball from Ankit. 33 for 1. That's Ankit. Very well done. Not a surprise, that kind of an effort from Suryansh. End of 18 Spectra Group. Maharaj Machinery overs 131 for 3. He's fielded very well tonight, Suryansh. Who's going to be bowling over number 19, the penultimate over. कुछ अच्छे छक्के और कुछ अच्छे चौके से सजी पारी खत्म हुई दक्ष अग्रवाल की. ईशान डटे हुए हैं. शुरुआत थोड़ी सी आक्रामक की, फिर उसके बाद थोड़ा सा संयम से खेला. Jigar wants to bowl one over. Looks like it. No. Penultimate over लेके the old war horse Monisha, the co-convener of the GSC T20 League. Off the field is quite a perfectionist. The two conveners of the event, that's for the GSC 45 plus T20 League, Sububhai and one more man, the two co-conveners, Prasad Karkar and Pramod Kashyap. Gaurav Talwar exchanging pleasantries. उस सिंगल के साथ 45 पर जा पहुंचे हैं. 40 गेंद का सामना किया है 45 रन बनाने में ईशान ने. 132. दूसरा रन भी बड़ी आसानी से ले लिया. पहला रन काफी जल्द लिया था, जिसके चलते वो दूसरा रन प्राप्त हुआ. 2 रनों के साथ रन संख्या अब 134. 10 बॉल बाकी है. 150 के लिए 16.
155 के लिए 21 चाहिए। The two conveners for the 45 plus T20 league, that's Subbubai and Paresh Muchala, the two co-conveners, Prasad Karkar and Pramod Kashyap. ऑफ द इनसाइड एज, मोटा वाला एज, क्रिप्टोमेनिया चौका होने की संभावना है, पूरे आसार है क्रिप्टोमेनिया चौका मुकम्मल होता हुआ। ये चौका मददगार साबित होगा अगर 150 के उस पार इस टीम को पहुंचना है तो। 49 पर जा पहुंचे हैं ईशान, काफी समय विकेट पे बिताया, अच्छी साझेदारी के भागीदार बने ईशान दक्ष के साथ, अच्छी भागीदारी निभाई दक्ष ने और ईशान ने आपस में। वरुण साबू मौजूद नहीं, प्रणव। एक 50 बन चुके ईशान के लिए। 50 अप ऑन द बोर्ड फॉर ईशान। Well played. You stay at the wicket, runs will come in, never mind the bowling attack. If you stay at the wicket, runs will keep coming in. Mistiming. Does not get a hold on that one. Ujjwal. Score after 19 overs, 141. The strike back with Goel. आखिरी 6 गेंदे अब सेमीफाइनल नंबर 1। Suryansh in charge of bowling the last over. 141. Ujjwal on strike. (142), 5 balls left. Driven downtown. It's been a subdued Ishan tonight, but he's done the job. He's accumulated good runs,
fighting runs. If not sparkling runs, fighting runs. Oh, that is well timed. No, if they would have run, he was a goner. 3 runs of the first 3 balls, not bad. 144, 3 balls left. Welcome to Rajesh Mahajan, Yogesh Kotak. Very well bowled. A bit of a struggle for Ishan in the latter part of the innings. It's been a struggle. But he stayed put to the wicket. Not in the pink of form. In spite of that, grit and determination. Breaks the shackles. So 149 it is with that Cryptomania boundary. Desperate times need desperate measures. They get to 149. A lot of pads will come off in the dressing room of team riders. 149 it is. 1 ball left. Current run rate 7.51. $150 up on the board. Oh, they go for the second run and that's a suicide. इस मैच को जीतने के लिए 151 रन्स बनाने होंगे. 151 runs to win the match of 120 balls. Not a mountain to climb, but a stiff ask. They'll have to play some fighting cricket to get there. मिलते हैं mid innings break के उस तरफ.
Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. कौन है रे? Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. कौन है रे?
Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. कौन है रे? Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. कौन है रे?
Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. कौन है रे?
Yes, the two umpires taking to the 22 yards. We are about to get started with the run chase. 151 required of 120 balls. That's the set target for Team Blasters. Welcome to Mr. Vicky Mehta. What was he appealing for? The Sultan of Swing, pitching a long way outside the leg stump. Kishore Pandey getting the new ball, bowling from the Infinitian, the man on strike, Vedant. Cryptomania boundary in the form of leg byes. No hint of movement in the first two balls.
Welcome to our governing council member and the cricket committee chairman, Mr. Kaushik Mehta and Paresh Muchala. Looking to mix up the deliveries. KP knows that the job is cut out when he's bowling to somebody as good as Vedant. No room for error. About to face his first delivery of the match. That's the captain and co-owner for Team Blasters, Varun Sabu. Quite an experienced man. A part of so many cricket tournaments in and around Mumbai. So many of them. Varun Sabu. Shikopal Jaju is missing. Yes, ग्राउंड्समैन वो सामने के हेलोजन अगर बंद होंगे तो प्लीज. Oh, that's a good pickup shot, making his intention clear. That's a Chetak Ply 6. Paras Buddhadev. Warmest welcome to Sharad Bhai Kelkar. One more Cryptomania boundary. Varun Sabu. What a way to get off the mark. A Chetak Ply 6 and a Cryptomania boundary. Way to go. He will be looking to make the most out of this opportunity. The intent is being ultra positive. The score at the end of the first over, that's a handsome 15 runs for the loss of no wickets. Quite an expensive first over from KP sir. सिद्धांत वाडेकर, जर आपल्याला ते समोरच्या लाईट्स बंद करता आले तर. थँक्यू. Omar Parit. He will be looking for a hint of movement, and if there is no movement, he will be looking to get a good shape on the ball, and then the line and length has to be spot on. A couple of miserly spells from Omar in this tournament. That's a cracker of a shot, low full toss, and nicely put away into the Cryptomania boundary. That was easy meat, easy pickings for Vedant. Getting the bottom hand into play, a strong bottom hand. Oh, what a shot, man. That's straight out of the top draw. Chetak Ply 6.
They're not going to be taking things lying down, stamping their authority quite early in the run chase. The job is cut out for team riders, especially with the likes of Vedanta and Varun in that kind of a mood. They're looking to take the bowling attack to the cleaners, looking to make optimum use of the power play restrictions. Way to go. Too wide. One extra run up on the board to take the score to 26 in quick time. This is only the over number 2. Where is the ball heading? That's KP. So 2 wide runs added. They have to be very careful here. 28 runs off the first 10 legal deliveries. Off to a flyer. They have only 150 to defend, and 28 runs have already been cut off from their target. Quite early in the run chase. Sharad Kelkar will get the perks of being a celebrity player. Anyways, just kidding. He's a fine young batsman. Welcome to Shailesh Chadwa, my good friend. Dr. Tushar has been quite busy. He's done one hell of a good job alongside the 2 physios from Zandu Fast Relief. A big thank you to both the physios from Zandu Fast Relief. They've done a fine job. Quite early on, it's Daksh after that kind of an expensive start. Both the new ball bowlers, they've gone for runs. So time to get that game plan B into action. That is such a good looking shot. Effortless shot from Varun Sabu and the premium Cryptomania boundary. I like the look of Varun Sabu. Under no pressure, he decided to go for it. And if we can come good tonight in a big way, that's going to be some sort of a relief, some sort of redemption for Varun Sabu, the batsman at least.
Slow to the air. Daksh knows that both these batters will love the ball coming out of the bat, so he's cutting down on the pace. Straight away revisiting his strategy. पहली गेंद के बाद देखे किस तरह से अपनी रफ्तार को कम कर दिया. Oh, well bowled. That was fired in. Nicely navigated by Sabu. End of a 3 Spectra Group Barrage Machinery overs, and that is 33 for none. That's a pretty ordinary delivery. He had no problems putting it away. Easy pickings. One more Cryptomania boundary. थोड़ी सी मिस टाइमिंग, वो बल्ला घुमा. एक काफी अरसे के बाद वापसी करते हुए वेदांत गाड़िया बैक टू द क्रिकेट फील्ड. और जो पहली 3 इनिंग्स में देखने को मिला है कि उनका बल्ला रनों से नहीं रूठा हुआ है. बढ़िया शॉट, थोड़ा सा रुक कर खेला, गेंद की गति को परखा, लाइन और लेंथ को परखा और फिर अपने आप को सेटअप किया. तेज तर्रा चेतक प्लाई छक्का. रनों की बौछार फिर से एक बार होती हुई वेदांत गाड़िया के बल्ले से. 43 रन्स बन चुके हैं. As straight as an arrow, Cryptomania boundary. Just look at the class of the man. Effortless batting, and if we can continue like this for the next 20 minutes, it's going to be a masterpiece that he will deliver. He's finding his bearings, finding his silken touch. This is exactly his silken touch, because almost effortless batting at the moment from Vedant Gadia. It's looking damn easy for him. 47 for none. One more ball left in the 4th over. It's got such a great repertoire of shots, electric range of shots. He can play that 360 degree all around the ground.
Dynamic runs being added. Once again making a big statement. That's Vedant Gadia looking a class apart. And he's been given a very good company by Varun Sabu. The firefighting needs to be done by team riders. They have to firefight. Vedant Gadia, his makeup is such that he's been orchestrated to be playing like this all the time. He prepares his body and mind for quality outcomes. You want to be a champion player, you got to prepare your body and mind for a very positive outcome, for a quality outcome. That's got to get into your system all the time. It's got to get into your muscle memory. This is exactly how a champion player needs to be programmed. ये जो प्रोग्राम सेट होता है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो भी कह लो, एक चैंपियन प्लेयर में इसी तरह का प्रोग्रामिंग होना चाहिए जिस तरह से वेदांत अपनी इनिंग्स को सजा रहा है. And what a refreshing outlook and approach from this man, Varun Sabu. Now he should not flatter to deceive. He's got to take it deep. We do not want 15-20 from Varun. It's got to be 40-50. 50 runs up on the board for Team Blasters. 51 to be precise. They're not even applauding. Oh, what a peach of a delivery. अच्छा लीव. One more left in the 5th over. ओवर की समाप्ति 5 ओवर्स के बाद 51 रन्स बने हैं बिना कोई नुकसान के. A very special player Vedant. What does he bring to the table? खास प्लेयर्स वहां से सांस लेना शुरू करते हैं जहां पर एक साधारण प्लेयर दम तोड़ देता है. यह फर्क है. जहां पर एक साधारण प्लेयर अपना दम तोड़ देता है वहां से एक खास प्लेयर अपनी सांस लेना शुरू करता है. स्वागत है निशिल मित्तल का. वे भी एक खास प्लेयर है. स्ट्रैटेजी बन रही है शैलेश चाड़वा, सुशील गौतम, प्रमोद कश्यप के बीच. यूं तो स्ट्रैटेजीज बनाते हैं ओनर्स, लेकिन प्लेयर्स भी स्ट्रैटेजीज बना रहे कि कहां कहां जाना है, कौन सी टीम्स में पहुंचना है. आज की शाम क्या टीम राइडर्स उस जीत और जुनून की ज्योत को जलाए रख पाएंगे, ये देखना होगा.
लंबे समय तक उस ज्योत को जलाए रखना होगा। इस वक्त शुरुआत बिल्कुल एक तरफी है। ये शुरुआत बिल्कुल टीम ब्लास्टर्स के पक्ष में। मनीष धनवानी, जिस तरह से अंकित अग्रवाल एक एक्स फैक्टर गेंदबाज है टीम ब्लास्टर्स के लिए, उसी तरह से एक एक्स फैक्टर गेंदबाज मनीष धनवानी है टीम राइडर्स के लिए। मे बी यू कुड ऑलमोस्ट put that title of man with the golden arm on his shoulders. Tough times, big challenge here. Are they up to the challenge, team riders? The ninja batsman for team Blasters, the absolute ninja batsman, that's Vedant Gardia, is off to a good start. Is looking dangerous. It's been a very challenging season for team riders. Over the last so many years, over the last 5 seasons, team riders has been one of the best teams. They have been so consistent with their performances. The last season, a grand finale defeat. After winning 8 league matches on the trot, the team was led by Kedia. Growing in confidence, growing in stature, playing with so much of panache. That's Varun Sabu. Close to his best, close to his vintage form. They need a wicket or two to pull things back, team riders. दम दिखाना होगा. काफी समय मिलेगा इस टूर्नामेंट के बाद अपने खेल का मूल्यांकन करने के लिए टीम राइडर्स को. व्हाट्स गॉन रॉन्ग, वेयर थिंग्स कुड हैव बीन बेटर. काफी समय मिलेगा मूल्यांकन करने के लिए. फिलहाल डटे रहना है, लगे रहना है. सेमीफाइनल है ये. गेंद नीचे रही. आखिरी वक्त पर अपने इरादे को बदला, अपने शॉट को बदला. 6 स्पेक्ट्रा ग्रुप 12 मशीनरी ओवर्स का पावर प्ले पीरियड समाप्त हुआ है. 53 रन्स बने हैं बिना कोई नुकसान के. केवल 2 ही रन्स दिए धनवानी ने. वहां पर सूझबूझ से गेंदबाजी करना ये उनका पेशा है और उसी तरह सुलझा हुआ क्रिकेट खेलने के लिए राइडर्स की टीम में समावेश हुआ है मनीष धनवानी का. और एक अनुभवी गेंदबाज मनु गौतम. मनु गौतम के लिए भी ये सीजन काफी साधारण रहा है. ये सेमीफाइनल मैच है, ये मोटिवेशन तो होना ही चाहिए. 45 प्लस की ऑक्शंस भी 20 तारीख को है, वो एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा मोटिवेशन होना चाहिए. जो भी 45 प्लस के आइकॉनिक प्लेयर्स है, मार्की प्लेयर्स है, the players who have thrown their hat in the ring, quite an important stint for them. The bold and the beautiful pair for team Blasters, that's Vedant and Varun Sabu. प्रतियोगिता से बाहर हुए हैं एस चार्जर्स और गैंगस्टर्स. एस चार्जर्स इस पूरे टूर्नामेंट को एक बुरे सपने जैसा भूलना चाहेगी. Mistimed, miscued hit.
पहले 8 मैचेस में अगर इस तरह का शॉट निकलता तो हाथ में जाता. आज कुछ अलग रौनक डालते हुए वरुण. जो भी टीम इस मैच को जीतेगी फाइनल खेलेगी सिल्वर प्लेट चैंपियनशिप का फाइनल मैच. एक अच्छी नींव रखते हुए इस नींव के बलबूते पर वो जीत की इमारत खड़ी करना चाहती हुई टीम ब्लास्टर्स. देखना है जीत का परचम किसके मत्थे लहराता है. बॉटम हैंड का क्या सटीक इस्तेमाल किया, नजाकत से खेला कलाइयों के सहारे. आज एक अलग किरदार निभाते हुए वरुण साबू बिल्कुल प्रेशर फ्री खेलते हुए क्रिप्टोमेनिया चौके के साथ रन संख्या 59 रनों पर. शायद एक नई गेंद देनी होगी. वेलकम टू संजना योगेश कोटक. वेलकम टू द बेटर हाफ ऑफ सुशील गौतम. सॉरी आज ही पता चला. ये गुत्ती आज सुलझी है योगेश. द बेटर हाफ ऑफ निगंत गौतम. We are into over number 7. Game number 41 of the ANANDRATHI GSC T20 League Season 5. Tough one. Oh, that was easy chance for the man who was running behind from the backward of square leg area. For him, that was a tough one. For the man coming in from the deep square leg region, that should have been taken. Ishan, will this night belong to Varun Sabu? Looks like it. Vedant on to 27 of 19 balls and Varun Sabu on to 26 of 22 balls. A sound start. Now when he puts his head down like this, Vedant Gadia looks even more dangerous. तो पता चलता है कि वो एक लंबी इनिंग्स खेलने की मंशा से उतरे हैं. इस तरह का रवैया जब इख्तियार करते हैं फिर तौबा नहीं सामने वाले की खैर नहीं. The last 3 days the temperatures have gone down like never before in this month, like never before this season. Around 15 degrees, 15 to 16 degrees for the first time this season. Pleasant conditions.
ओ साधारण फील्डिंग, बहुत ही साधारण एफर्ट, जिसके चलते जहां पर एक ही रन होना चाहिए था वहां पर क्रिप्टोमेनिया चौका दर्ज हुआ। देखना है कौन सी टीम आज की शाम इस सेमीफाइनल मैच में अपने जीत के हस्ताक्षर दर्ज करती है। फिलहाल अच्छी पोजीशन में है ब्लास्टर्स, अनुकूल स्थिति में। प्रतिकूल माहौल बना हुआ है टीम राइडर्स के लिए। दे नीड अ स्पेशल एफर्ट टू bring things back in their favor. They will need something magical out here. At the moment, both these batters very clinical in their approach. The attitude spot on. अच्छे तेवर दर्शाते हुए वरुण और वेदांत। मामला गंभीर है। Well bowled, well played. आठवां स्पेक्ट्रा ग्रुप भारत मशीनरी ओवर अपने प्रगति पथ पर है। 67 रन्स बने हैं बिना कोई नुकसान के। The biggest thank you to our Governing Council Chairman, Dr. Vinay Jain, the Honorary Secretary, Chartered Accountant Sanjay Malu sir, the Honorary Treasurer, Mr. Kabra, the GC member and Cricket Committee Chairman, Mr. Kaushik Mehta. Oh, that is a soft dismissal. That is a soft dismissal. They get their man. And not the way one would have liked to get out after being so settled. K. Talsania Construction, the first breakthrough for Team Riders. They wanted that breakthrough desperately. It's a fair delivery. That's been confirmed by the third umpire, Dinesh Kashyap sir. That message comes from the Sejal Realty DRS box. .68 for 1. In comes Sharad Kelkar. One terrific knock from Sharad Kelkar earlier in the tournament, a 70+ knock. That was the first half century registered by Sharad Kelkar. He comes into he comes into a situation which is looking good for Team Blasters. No pressure at all as far as Sharad Kelkar is concerned, batting in the company of Vedant Gadia. The pressure will be off. अनुकूल स्थिति में बल्लेबाजी करने के लिए उतरे हैं। अपना स्वाभाविक खेलने का लाइसेंस मिलेगा वेदांत गाडिया की तरफ से। अच्छा गेम तो था लेकिन लंबा नहीं बना सके। अपना पोटेंशियल दर्शाया। गलती की सजा फांसी है बल्लेबाज के लिए क्रिकेट में। गेंदबाज कभी कभी वापसी कर सकता है, बल्लेबाज वापसी नहीं कर पाता। .72 balls and 83 required. He looked good for whatever time he spent at the wicket, Varun Sabu. The Sharad into the scheme of things. Oh, just look at that pickup shot. Manu Gautam has no answer. He's shell-shocked. Shell-shocked at the moment. He's playing like a Ferrari. The ninja player. Vedant Gadia coming into his zone. Chetak ply 6. Maharaja of ki pasand. 74 for 1.
We are into the ninth over, the start of the ninth over. Is at peace with himself. Is into the zone, Vedant. In the zone. Steering the ball. Finding Rohit Rajan in the way. Point area. 69 balls and 77 required. A little uppish, but in total control. Nobody inside the circle in the catching positions. First time in the semi-final. That's Sharad. Playing it close to the body, getting that big front foot forward, getting the bat in front of the pad. Ample time for Sharad to get his eye in. Ample time. He can play his own game. केवल अपने आप पर विजय हासिल करना है शरद केलकर ने। 66 गेंदों में मैच को जीतने के लिए 76 रन्स बनाने हैं। 9 स्पेक्ट्रा ग्रुप भारत मशीनरी ओवर्स के पश्चात 75 रन्स बने हैं 1 विकेट के नुकसान पर। हमारे ग्राउंड्समैन जायसवाल बंधु अभिनंदन के पात्र है। हमारे अंपायर्स राजू पवार सर, नवीन कोटक सर, थर्ड अंपायर दिनेश कश्यप सर, हमारे और एक ऑन फील्ड अंपायर अजित चौहान सर और हमारे टूर्नामेंट रेफरी पश्चिम पाठक सर। बिग थैंक यू टू द अंपायरिंग पैनल। द स्कोरिंग टीम रौनक जैन अंडर द लीडरशिप ऑफ जॉन्टी सिंह, Promo Productions under the stewardship of Pramod Kashyap, Akash Singh, the man at the console, Siddhant Wadekar from the GSC staff team, and of course the subcommittee to Kaushik Bhai. Kleptomania Chauka, Omay Parit gives up the chase very early. Kleptomania boundary. रविंद्र मथारू, जिसके चलते वो रिफ्रेशिंग ताजगी भरी चाय और कॉफी मिलती है हमेशा। रविंद्र मथारू रविंद्र मथारू का रवैया भी उतना ही ताजगी भरा होता है जितनी उनकी चाय और कॉफी है। कुल मिला के बहुत ही अच्छा माहौल। सिल्वर प्लेट का ये पहला सेमीफाइनल, कल दूसरा खेला जाएगा। Form is temporary, class is permanent. Vedanta showing to the GSC cricket what we all have missed over the last so many months.
3 balls left before we can let the drinks trolley enter inside. 3 balls left. Two balls left. हल्का सा बल्ला गुमा था. ड्रिंक्स इंटरवल तक बिना बिछड़े वापस आना होगा, फिर नई रणनीति बनानी होगी. ऑन स्क्रीन तो शरद केलकर पॉजिटिव और नेगेटिव भूमिका बखूबी निभाते हैं. यहां पर बिल्कुल पॉजिटिव भूमिका निभानी होगी. व्हाट अ फाइन आर्टिस्ट. Great screen presence that Sharad Khelkar lights up the screen whenever he comes up. For the moment, stealing the spotlight from Sharad, that's Vedant Gadia. Score after 10 overs, ladies and gentlemen, boys and girls, 82 runs for the loss of 1 wicket. मिलते एक छोटे से ब्रेक के उस तरफ. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. कौन है रे?
Oh, one more loose delivery, and that has been dispatched out of sideways disdain. That is the half century for Vedant. So easily crafted, that half century. So easily crafted. Is that clap exercise a counter to riders? Riders का वो trademark है. Nobody can copy it. Nobody can take it away. On any other day, he would have put it away into the Cryptomania boundary fence. The placement a little off directed. '88, we are into over number 11. A cheeky shot. अपने मन मुताबिक इस इनिंग्स को सजाते हुए, बिल्कुल अपने मन मुताबिक. Golden chance for Sharad Kelkar to be among some runs, to spend some quality time at the wicket, to get some good practice under the belt. That's a golden opportunity. Now it's all up to him whether he can stay at the wicket for a long time. In the company of Vedant Gadia should not be any kind of a big pressure. Score after 11 Spectra Group, Barrage Machinery overs 89 for the loss of just one K Talsania construction wicket. एक अद्भुत वापसी की है वेदांत गाडिया ने जीएससी क्रिकेट में. मेरे ख्याल से एक 2 सीजन्स मिस करने के बाद वापस आते हुए 2.5 सीजन्स मिस किए थे. केवल एक ही फर्क है, थोड़ा सा वेट पुट ऑन किया है. अगले 2 महीनों में वो वेट भी, एक्स्ट्रा वेट चला जाएगा. पहले जैसा ही 24 कैरेट गोल्ड बल्लेबाजी करते हुए वेदांत गाडिया. मनीष धनवानी आखिरी ओवर. हो just look at Raghav. Well bowled.
क्रिप्टोमेनिया चौका, दिशा से भटके जो फील्ड सजी है उस तरह की गेंद पर कत्लेआम होगा, बिल्कुल कत्लेआम गेंदबाज का। बड़ा शॉट, क्या शॉट निकाला है अपने पिटारे से। 100 runs up on the board for Team Blasters. केवल और 50 बनाने हैं, केवल 50। बॉल टू बॉल से भी कम है। 9 विकेट्स हाथों में महफूज है। 2 सेट बल्लेबाज। मंजर काफी अच्छा नजर आता हुआ टीम ब्लास्टर्स के लिए। Well and truly on course. That's a 85 meter hit. क्या बात है, ये वाला शॉट मेरे ख्याल में उस छक्के से भी अच्छा शॉट ये वाला चौका था। क्रिप्टोमेनिया चौका बिल्कुल अपनी रंगत में नजर आते हुए, उजागर होकर, आक्रामक रंग पेश करते हुए, शरत खेलकर। तकनीक को किनारे नहीं किया है। क्या वो गेंद लंबी गई है, देखना होगा। ओ कैच छूटा है। Oh, he seems to be in some bother. Physio, can you get in? Welcome to Mr. Raman Khatri. The men padded up. Just like the last match, Tushar Uchil has got the pads on for a long time. Sagar Uchil, yes. But yes, he will not mind even if he does not get a chance to bat. The main thing is to get to the final, isn't it? His team is on cruise mode. You do not want any hiccups. You do not want any obstacles on the way. Sagar Uchil got off to a flying start and then went a little cold after that big knock in the first match. Started with a bang, then going a little cold. Smith, Ravindra Matharu. Obviously, Ujjwal Goel is coming back to the physio stable maybe. 107 for 1. 49 balls and 44 required. Your guess is as good as mine. The team that gets to the grand finale of this tournament, they pull back things to a certain extent.
They'll get some of their lost pride back. करीबन हर गेंद पर अब प्रहार करते हुए शरद सेट हो चुके और उस गेंद को अच्छी तरह से साइट करते हुए 12 ओवर्स के बाद 108 रन्स, केवल एक ही विकेट का पतन हुआ है। टीम ब्लास्टर्स बनाम टीम राइडर्स, सिल्वर प्लेट का ये पहला सेमीफाइनल, कल दूसरा सेमीफाइनल होगा टीम टाइगर्स बनाम टीम वॉरियर्स। बहुत ही ज्यादा प्रतिकूल स्थिति है टीम राइडर्स के लिए, कोई ज्यादा विकल्प नहीं है आज दक्ष के पास। मनु गौतम ने अपने 3 ओवर्स में 22 रन से दिए हैं। हमने स्पेल का आखिरी ओवर लेकर बिल्कुल तैयार, स्ट्राइक पर शरद। Dhanraj Jalan, one of the co-owners. A below average season for Team Riders. Otherwise, Team Riders over the last 4 years, they have been the team to watch out for always, Team Riders. Could happen to any team, a bad season. The thing is to regroup. चलिए, वेदांत को भी कोई रिफ्यूज कर सकता है। क्रेप्टोमेनिया चौका, इसी वजह से वेदांत को रोका था। मोटा वाला एज। रोकना मुश्किल है अब टीम ब्लास्टर्स को। मोमेंटम बिल्कुल उनके पक्ष में जा चुका है, बिल्कुल क्रूज मोड पर है टीम ब्लास्टर्स। ऐसे हालात में केवल एक चमत्कार ही टीम राइडर्स को बचा सकता है। वेदांत हैज लर्न दिस लेसन, वो अभी कभी नहीं भागेगा। एक 112। अच्छा शॉट है, अथॉरिटी वाला शॉट, एक बाउंस। क्रिप्टोमेनिया बाउंड्री को चीरती हुई वो गेंद अपनी मंजिल तक पहुंची। 116। करीबन हर शॉट को अपने सही अंजाम तक पहुंचाते हुए शरद, अपनी मंजिल तक वो गेंद पहुंचती हुई बहुत ही कम समय में। क्या बात है, ओहो, 85 मीटर वाला ये चेतक प्लाई छक्का। वेदांत भी शरद की उस बल्लेबाजी को एंजॉय करता हुआ। केवल और केवल 29 गेंदों में यह पार्टनरशिप 54 रनों की बन चुकी है। उन 54 रनों में से 33 रन बनाया शरद केलकर ने। तेरह के बाद 123 रन। रिक्वायर्ड रन रेट 4.00।
42 गेंदों में केवल 28 रनों की जरूरत आन पड़ी है टीम ब्लास्टर्स को। एक ठोस कदम उठाया है पोडियम की तरफ। सेमीफाइनल मैच है। इस वक्त ऐसा प्रतीत होता हुआ कि टीम ब्लास्टर्स के पक्ष में यह मैच है। बिल्कुल इस मैच को अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है, कब्जा जमा लिया है। वेदांत गाड़िया का जिस तरह से अब साथ निभा रहे शरद केलकर, बखूबी बल्लेबाजी। वेदांत गाड़िया भी इस आक्रामक बल्लेबाजी का लुत्फ उठाते हुए, किसी भी तरह से कोई भी प्रेशर नहीं अब टीम ब्लास्टर्स के खेमे में, 1% भी प्रेशर नहीं है। क्रिप्टोमेनिया चौका, भागने की कोई जरूरत है ही नहीं। 127। फिर से एक बार डंक की चोट पे यहां पर यह ऐलान होता हुआ कि दूसरी बल्लेबाजी करना आसान है, टारगेट को चेस करना यह 90% सभी टीमों ने किया हुआ है सफलतापूर्वक। इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा मायने रखा है टॉस ने, डिसाइसिव फैक्टर। नहीं रोक पाएंगे शरद को। और एक क्रिप्टोमेनिया चौका, हालांकि शॉट में वो पावर नहीं था, प्लेसमेंट सटीक। ही मूव्स इनटू द 40s। 19 गेंदों में 42 रन बना चुके हैं। अब वो हाफ सेंचुरी दर्ज करना चाहेंगे। आने वाले मैच के लिए वो एक बहुत ही बड़ा विकल्प आएगा। आत्मविश्वास के साथ फाइनल मैच को अप्रोच करेंगे शरद। ब्लास्टर्स का आत्मविश्वास अपने सीमा चरण पर जिद और जुनून दोनों का अच्छा परिचय देती हुई टीम ब्लास्टर्स। कैप्टोमेनिया चौका, 20 गेंदों में 46 रन बना लिए हैं। 20 में 46, फास्टेस्ट 50 18 गेंदों में था। 19 गेंदों में दो बल्लेबाजों ने 50 रन बनाए हैं। यहां पर 20 गेंदों में 46 बनाने हैं, और ऐसा शायद हम मान के चल सकते हैं कि इसी गेंद पर वो 50 रन बन सकते हैं। वाइड गेंद, जलान गेंद को खेल करके रेंज से दूर रखने की कोशिश। पचास रन बन चुके हैं। नो बॉल का इशारा, बोनस टाइम और एक अर्धशतक, दूसरा वाला अर्धशतक। ये वाला बिल्कुल एंटरटेनिंग, बिल्कुल एंटरटेनिंग। बहुत ही कम समय ऐसा नजर आता है कि जब वेदांत गाड़िया सेट हो चुके, ही वॉज फोर्स टू प्ले सेकंड फिडल and he enjoyed Sharad's batting. Way to go, Team Blasters finding their blasting form at last. This is the good news. Just look at the big broad smile on Monish Shah's face. That tells you the story of the match. He's gone berserk. अरे भाई, all the pads are coming off. केवल एक चौका दूर है, इस मैच के मंजर को पलट के रख दिया, पासा पलट दिया अपने इस शानदार बल्लेबाजी से शरद केलकर ने। बिल्कुल जीत के दरवाजे पर दस्तक देती हुई डंके की चोट पर टीम ब्लास्टर्स।
It's going to be a early finish. क्या बात है, ऑलमोस्ट 55 मिनटों का एक अर्ली फिनिश. They have been outplayed, Team Riders. You got to give it to Team Blasters. They were dominant in both the departments, batting or bowling. And what a refreshing approach and attitude from Sharat Kelkar. The seal on the deal. चलिए डंके की चोट पे इस रन चेस को खत्म किया है वेदांत गाडिया ने. ऑलमोस्ट द परफेक्ट गेम, ऑलमोस्ट द परफेक्ट गेम. आखिरकार वो सकारात्मक माहौल बना है टीम ब्लास्टर्स के ड्रेसिंग रूम में. काफी पॉजिटिव एनर्जी नजर आती हुई. A below average season for Team Riders comes to an end as far as the ANANDRATHI GSC T20 League is concerned. But all the talented boys and the seniors, they will be playing so much of cricket in this season ahead. So here's wishing Team Riders the very best. Thank you to Lakshmikant Tibrewala ji, Ashok ji Jalan and Surendra Gadia ji. Thank you to Varun Bhai Sabu, Chigopal Jaju and Jay Bhai Agarwal, the ownership stakes of Team Blasters. Requesting one and all to get to the presentation area. It's going to be Raman Khatri, Shailesh Chadwa and Monish Shah as a part of our presentation ceremony. है था कभी जो था जवान, आज भी है उतनी ही आग, दिल में है अरमान. जुनू है जिंदा, दिल में है ये इरादा. उम्र सिर्फ एक अंगा है हम में ये ख्वाब सादा. बात और बात से जुड़ने का है जो एक फासला. हम पाता बस के हैं पर जुनू है जिंदा. थोड़ा सा दर्द, थोड़ा सा है गम, पर क्रिकेट का है प्यार. साथ हो सब, जख्मों से भी हम और मजबूत होते हैं. हर बॉल, हर शॉट और हर रन पे जाते हैं. थोड़ा थोड़ा संभल के लेकिन रास्ते हैं साफ. अब भी है उम्मीद, अब भी है साफ. जुनू है जिंदा, दिल में है ये इरादा. उम्र सिर्फ एक अंगा है हम में ये ख्वाब सादा. बात और बात से जुड़ने का है जो एक फासला. हम पाता बस के हैं पर जुनू है जिंदा. छोटी सी थोड़ी सी देर हो लेकिन है मैदान में. वो चलने की राह है रात हर दिन जब तक है दम. तब तक है मैदान में जीत हर बात की. हमसे बड़ा है जुनू का रम. जुनू है जिंदा, दिल में है ये इरादा. उम्र सिर्फ एक अंगा है हम में ये ख्वाब सादा. बात और बात से जुड़ने का है जो एक फासला. हम पाता दस के हैं पर जुनू है जिंदा.
जिंदगी के हर पल में खिलते रहे जो जुनून, हर शॉट हर रन हो जाए तुम, हम पागल देश के हैं पर जुनून है जिंदा। हाँ जुनून है जिंदा। थोड़ा सा डर थोड़ा सा है गम, पर क्रिकेट का है प्यार साथों सब। जख्मों से भी हम और मजबूत होते हैं, हर बार हर शॉट और हर रन पे जाते हैं। थोड़ा थोड़ा संभल के लेकिन रास्ते है साफ, अब भी है उम्मीद अब भी है साफ। जुनून है जिंदा दिल में है ये इरादा, उम्र सिर्फ एक अंगा है हम में ये ख्वाब सादा। बादल पर से जुड़ने का है जो एक फासला, हम पागल देश के हैं पर जुनून है जिंदा। जिंदगी के हर पल में खिलते रहे जो जुनून, हर शॉट हर रन हो जाए धूम, हम पागल देश के हैं पर जुनून है जिंदा। जुनून है जिंदा। जुनून है जिंदा। Yes, sir. Good evening and the warmest of warm welcome to the post-match presentation as the first semi-final in the Silver Plate Championship of the Anandrathi GSC T20 League comes to an end. Big congratulations to Team Blasters for making it to the grand finale. Zordar taaliya Team Blasters ke liye. Presentation party, we have got Mr. Raman Khatri, Mr. Shailesh Chadwa, Mr. Monish and Mr. Paresh Muchala. Time for us to have a chat with Daksh Agarwal. Daksh, a below average season comes to an end. Quite a few lessons to learn, but quite a few guys will be playing so much of cricket outside the GSC, inside the GSC. A long way to go. You got to make sure that the morale does not drop in the team. And overall, how will you sum up this season? I think I'll just take a moment here. I might just stretch it for a minute or two extra. If I call any person who's even walking on the walking track right now, I'll ask him to bat and bowl, he'll bowl. If I ask him to take 10 catches, he won't be able to. And I can give it in writing. Every person who comes here, who registers, I think approximately 200 people sold for the auctions. Fielding practice is important. Batting, bowling, sab log kar sakte hai. Cricket is such a game where if you're dropping a single catch, the ball is going to chase you. Not for one match, not for two matches, not for three matches throughout the season. And I think that's been my biggest takeaway from this tournament, that fielding is the way T20 is going to be won. We call it a batsman's game. The batsman is going to dominate. If a bowler has got his plans needs to be supported by the fielders who are sitting outside the circle. And just that way Team Riders was this year, I know the owners would be pretty unhappy with the performance, not qualifying or not even making it to the finals of the Silver Cup. But I'm sure that the batch that we had this year is really confident. And while our match got over, I just told them one thing, that you all need to learn what is something that you will improve next year. And if you all have done something bad this year, this shouldn't demotivate you
for you to not register next year. And I think that is something that should give the guys some confidence. Irrespective, we've enjoyed a lot for these 2.5, 3 months. Grateful to the GSC committee and the organizing committee to give us a platform to help us play such a tournament like this, give us practice wickets and give us these matches. They extended it to the Silver Cup, giving more opportunity to people who couldn't play. But just as always, Riders is a very confident batch, and I'm sure, pretty sure, that even if I'm not there in this team next year or I am there, we'll have a 10-time better team than this and we'll make it to the playoffs next year. A fantastic closing remarks from Daksh Agarwal from the horse's mouth. He mentioned that fielding has to be spot on, and in this tournament we have seen some splendid batting, some awesome bowling. The catching has left a lot to be desired across the 10 teams. Anyways, nicely summed up. It's time for Varun Sabu to come up on stage. That's a happy captain. Yes, the 55 plus tennis cricket tournament happening from the 16th of Jan. The registrations are on, so kindly do the needful. 16th, 17th and 18th. 2 days out of those 3. Any 2 days, the 55 plus cricket tournament. Varun Sabu, congratulations. It's a consolation win, isn't it? Mission 8 didn't come your way, but Mission 2 was to get to the final of the Silver Cup, and you do that in style. Fantastic batting by Vedant Gadia. The moment Vedant Gadia has arrived into the team, Team Blasters has turned a new leaf, and what a knock by Sharat Kelkar. Everything falling in place. A good start by yourself as well. I'll also take 1 minute plus. So first of all, Riders, it's an honor to win against you all. You all are super players. Nothing takes away one match. Come on. And Daksh and Manu and Mayuresh and all great players in the team, right? UG, but that's okay. One bad day doesn't make you all bad players. So no problem. Next time you all will come stronger. Coming back to Blasters, hats off team. I mean, coming back from 3 losses, 3-0, and then winning 5 matches out of 6 matches. It really makes a statement, right? When you speak about Sharat Kelkar, superstar, screen pe bhi hai, yahan pe bhi hai. What a hitting, man. Where were you hitting? I mean, it was insane. Our team has given him the name of Andhra Russell. So he's our Andhra Russell. He's wearing that cap also. You can see that. So well played, Sharad. Vedant, top class here. Your coming has changed the face of our team. We are winning in 14th over. We can't even imagine doing this. So great. I mean, Blasters has come back. Great effort, all in the team. Bowlers were superb. Smith was phenomenal. Ankit, as always, was very good. It was not easy to bowl against someone like a Daksh when he was on song. So really well done by taking his wicket also. But very well done, everyone. Suryansh turned out to be very good today. I think I can just keep talking about the team effort, and everyone has done so well. Looking forward to picking the cup, guys. So all the best, and let's come back strong. Yes, so this is what confidence can do to a captain and the team. They are back with a blast team, Blasters. It's time for us to hand over the Catch of the Match award sponsored by Mr. Khandelwal from #Nuts. And the Catch of the Match goes to Dhanraj Jalan. Well done, Dhanraj. Good catch. Lots of cricket left in the season. Get going. One bad season does not mean that your story is over. चलता है, ठीक है. कभी कभी इस तरह के सीजन्स को एज अ प्रोफेशनल बंच ऑफ क्रिकेटर्स सामना करना होगा. यू गॉट टू डाइजेस्ट दैट, लर्न फ्रॉम दैट. Time for us to hand over the Man of the Match award. A gift hamper of ₹1,000 on behalf of Mr. Deshal Gopani after every game. Me and Specs, वेदांत और शरद में वो गुफ्तगू होती हुई. मैन ऑफ द मैच गोज टू वेदांत गाडिया. वो एंड्री रसल का जो टैग दिया वो बहुत मायने रखता है शरद के लिए. ही वुड लव दैट टैग. या वी ऑलवेज गो विद द ऐप, ऑलवेज गो विद द ऐप.
There is no doubt that Vedant, you are the Kohinoor Hira at the GSC Cricket. You're back with a bang. You have shown to GSC Cricket what we have missed over the last 2 seasons. Form is temporary, class is permanent. You're putting your head down, and when you're in that kind of a mood, beware the opponents, whoever they are. Well done. Way to go. Thank you. It's all about enjoying cricket for me right now. I mean, it's been a long stint away from cricket, about 9 months without getting on the ground, and it's a privilege to come and play cricket. And I take utmost happiness to come on the ground and perform for my team. And yeah, this win is for Blasters, and I hope we go and win the tournament ahead. So that's Vedant Gadia. With this, we come to an end of this wonderful evening. Thank you, gentlemen. कल सेकेंड सेमीफाइनल है वॉरियर्स बनाम टीम टाइगर्स. कल ठीक 6:30 बजे टॉस के लिए मिलते. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू एवरीबडी फॉर सपोर्टिंग GSC क्रिकेट. थैंक यू. गुड नाइट. गॉड ब्लेस.